Hello again and welcome back to another session of commerce class with me Suman Rathore. Students, हमने हमारे लास्ट सेशन में केस स्टडी सीरीज के अंदर बिजनेस स्टडीज के लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की भी केस स्टडी सॉल्व कर ली थी. So today onwards we will solve practice questions from previous years so that you have an idea how to attempt the questions, because these are the questions that are most likely to come this year also. And many a times I have seen that students know the answer, they know the concept, but they don't know how to write it in the paper. और वैसे भी अभी तक आपने अपने बिजनेस स्टडीज के सारे नोट्स एकदम अच्छे से लर्न कर लिए होंगे. तो अब आपको 40 आउट ऑफ 40 लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितने हो सके सैम्पल पेपर सॉल्व करें, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स के मिल सकें वो सॉल्व करें, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि एग्जाम में आपने क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं. ओके और इसीलिए अब से हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टिल योर एग्जाम सो दैट यू मे नॉट लूज एनी मार्क्स ऑन योर क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. So our first question says, Mr. Sarthi, the ex-chairman of Swadesh Limited, built up his successor before retiring. Following the norm set up by himself, he handed over the reins of the company to the co-founder Mr. Shravan, who had the potential to bring about change in the behavior of others. Identify the concept of management which was the reason why Mr. Sarthi chose Mr. Shravan to be his successor. And this question carries 2 marks. So our first question is quite easy, and the concept here is leadership. And because this question carries 2 marks, so you have to give the answer in 2 or 3 lines. So you can write the meaning or definition of the term leadership. So you can write it like, leadership is the ability to influence or change the behavior of others to achieve the specified goals. Now our next question says, Ali Muhammad, the CEO of Super Limited, believes that human resource is the most important asset of the firm. He believes that no organization can be successful unless it can fill and keep fill the various positions provided for in the structure with the right kind of people. Identify the function of management being discussed above and state the benefits to the organization that its proper application in the firm will ensure. And this question carries 3 marks. So here, first of all, you have to identify the concept, and then because this question carries 3 marks, so I would suggest that give any 3 benefits of that concept. Okay? So यहाँ पे क्योंकि हम हमारे मैन पावर के अपॉइंटमेंट और उनके रिटेंशन की बात कर रहे हैं, so we are talking about staffing function. Okay? And then you can give any 3 benefits of the function of staffing. Like you can say that it ensures higher performance by putting right person at right job, and then you can say that it helps in estimating correct manpower requirement so as to facilitate proper utilization of resources. Then you can say that it helps in timely achievement of organizational goals, etc. etc. So you can give any 3 benefits that you have prepared, and you can complete this question like this. Then our next question says, ABC Limited has debt equity ratio of 3:1, whereas XYZ Limited has debt equity ratio of 1:1. Name and explain the advantage ABC Limited will have over XYZ Limited when the rate of interest is lower than the rate of return on investment of the company. And this question carries 2 marks. Now before answering this question, I want to give you a very important tip. यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए ही पूछा गया है. सो सिंपली यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट एंड यू कैन एक्सप्लेन इट इन 2 or 3 लाइन. बट ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, और ये कहा जा सकता है कि एक्सप्लेन और सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट और द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ओके, और उसका एक बहुत ही इजी सिंपल एग्जाम्पल आपको आपकी CBSE बुक में या फिर जो भी आप रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं उन बुक्स में भी दिया हुआ है. प्लीज गो थ्रू दैट एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे केसेस में इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सपोर्ट करने के लिए भी कहा जाता है. ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी.
Now, trading on equity is an approach or practice used by the companies or firms where they include more debts in their capital structure so as to give greater return to equity shareholders on their investment. Okay? And then please go through your books and understand that practical question properly so that you can give the answer properly if it comes in long answer questions. Okay? Now our next question says, what is the meaning of directing? State any 4 points of importance of directing as a function of management. Or what is the meaning of motivation? State the features of motivation as an element of directing. And this question carries 5 marks. So as this is a direct question, so first of all you have to write the meaning of directing. Like directing is telling people what to do and then saying that they do it to the best of their ability, or whatever meaning you have prepared, you can write that. Okay. And then for benefits of directing, you can say that directing initiates action, directing improves efficiency, directing facilitates growth, directing facilitates coordination, directing ensures stability and growth, and then explain all these points in 2 or 3 lines, like for each of the point. Okay. And this question is also ready. Now our next question says, Vikrant joins his father's business of organic masalas near Kotgarh in Himachal after completing his MBA. In order to capture major share of the market, he decided to sell the product in small attractive packages by using the latest packaging technology. His father suggested that they hire financial consultants to estimate the amount of funds that would be required for the purpose and timings when it would be required. The concept being discussed by Vikrant's father links which financial decision with the investment decision? First, dividend decision. Second, financial planning. Third, capital structure decision. And fourth is financing decision. Then it says also explain the decision identified above. And this question carries 3 marks. Now see, ये question easy होते हुए भी थोड़ा सा tricky है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने options में आपको financial planning और financing decision दोनों दिए हैं. और मैंने देखा है students बहुत बार financial planning और financing decision में confuse हो जाते हैं. तो financing decision क्या होता है? Where you decide on the amount of fund to be raised from various long-term sources of finance. Okay? कि आपको कितना amount कब long-term sources of funds के through raise करना है. Whereas financial planning is concerned with estimating the requirement of fund, determining the sources of fund, which includes both long-term and short-term sources of fund, and it ensures proper utilization of funds also. Okay? वही करते हैं ना हम planning में. तो इसी तरह से आपको यहाँ पे financing decision को 2 और 3 लाइन्स में एक्सप्लेन कर देना है और आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है रेडी. Now our next question says, Raghav's friend Raman works as chartered accountant in Solutions Limited. Raman is a meeting with the board of directors of the company came to know that the firm would soon be declaring bonus issue which would result in increase in the price of shares. Considering this, Raman advised Raghav to purchase the shares of Solutions Limited, who acted on his advice and bought the shares before time. Explain the function of SEBI which can control such malpractices, and this question carries 3 marks. Now see, SEBI के 3 types of functions होते हैं. First is development function, second is regulatory function, third is protective function. और यहाँ पे इस पूरे केस में जहाँ की रमन को पता है कि कंपनी कुछ बोनस शेयर इशू करने वाली है और वो ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड को लीक कर देता है, जिसके बेसिस पे फ्रेंड कुछ शेयर खरीदता है और वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं. तो यहाँ पे ये इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसको कि सेबी प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंडर कंट्रोल कर सकता है. राइट? तो यही आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोटेक्टिव फंक्शन, और फिर प्रोटेक्टिव फंक्शन सेबी के कौन कौन से होते हैं वो आप एक्सप्लेन कर देंगे. Like first point you can write prohibition of unfair and restrictive trade practices in securities market. Then second is controlling insider trading and impose penalties for such practices.
Then third is undertaking steps for investors protection, and like this, by writing all these 3 points, you can complete this question also. Now our next question says, Sheila went to a free eye camp and got her eyes operated for cataract. The surgery was not done properly, due to which she lost her vision. Where can she file a complaint under Consumer Protection Act and why? And this question carries 2 marks. So here Sheila cannot file a complaint because she has availed the services without any consideration. कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपको ये पढ़ा होगा कि हु इज़ अ कंज्यूमर एंड हु इज़ नॉट अ कंज्यूमर. ओके, तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो पर्सन फ्री में कोई भी गुड्स लेते हैं या फिर फ्री में कोई सर्विसेज अवेल करते हैं वो कंज्यूमर कंसिडर नहीं किए जाते. एज सच शीला इज नॉट अ कंज्यूमर इन दिस केस, क्योंकि वो फ्री आई कैंप में गई थी, इसलिए वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं कर सकती. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, बनवारी लाल इज अ क्लॉथ मर्चेंट in Karol Bagh. His grandsons are requesting him to let them diversify the business into bridal wear. Banwari Lal has agreed, but on the condition that they will follow the function of management he has always followed, which helps an organization in keeping track of the progress of activities and ensures that the activities conform to the standards set in advance so that organizational goals are achieved. Name the function of management which Banwari Lal is asking his grandsons to follow. List any 2 reasons why it is considered as an indispensable function of management. And this question carries 3 marks. So here, first of all, you have to identify the function of management, and then because this question carries 3 marks, so write any 3 points of importance of that function. Okay? तो यहाँ पे हम कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कंट्रोलिंग की, क्योंकि कंट्रोलिंग एंश्योर्स दैट एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन कंफर्मिटी विद द प्लान्स, राइट. और फिर आपने उसी तरह से इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के कोई भी 3 पॉइंट्स लिखने हैं और उनको एक्सप्लेन कर देना है इन 2 or 3 लाइन्स. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, रीटा शर्मा हु वर्क्स एज अ गार्ड इन अ स्कूल परचेज्ड 2 shirts for 460 rupees each for her son. When she went back home, she realized that the shirt was small in size for her son. She decided to ask for return of money or exchange of the shirt with an appropriate size. But the store owner refused to return the money or exchange the shirt. Rita Sharma was disheartened. Her friend advised her to go to Seva Sadan, an autonomous voluntary organization working for the protection of consumer welfare. The organization helped her by explaining her the legal procedure as well as educated her about her rights as a consumer and helped her in filing a complaint and getting relief. With the help of the organization, Rita was able to get her money back from the store. Enumerate the rights of a consumer which Rita Sharma was able to exercise with the help of the voluntary organization. And this question carries 3 marks. Now, यहाँ पे जब रीटा शर्मा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ दैट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन केस फाइल करती है, तो वो अपना राइट टू बी हर्ड एक्सरसाइज कर रही है. ओके, एंड देन व्हेन शी गेट हर मनी बैक, तो वहां पे बात हो रही है राइट टू सीक रिड्रेसल वेयर अ पर्सन हैज अ राइट टू गेट रिलीफ इन केस ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और डेफिशिएंट सर्विसेज, राइट. और जहाँ पे ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रीटा शर्मा को एजुकेट कर रहा है अबाउट हर राइट्स एंड रिलीफ अंडर द एक्ट, तो यहाँ पे बात हो रही है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन की. यही तीनों राइट्स आपने एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देने हैं और आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है तैयार. Now our next question says, what is meant by capital budgeting? State any 4 factors affecting fixed capital requirement of a firm, or enumerate any 5 points of importance of financial planning. And this question carries 5 marks. Now again, this is a direct question. So सबसे पहले आपको अपना capital budgeting क्या होता है वो explain करना है, and then you have to write any 4 factors affecting fixed capital requirement.
जो कि आपको बुक में दे रखे हैं ना, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिस्क इन्वॉल्व, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनमें से कोई भी 4 पॉइंट्स उठाइए और वो यहाँ लिख दीजिए। ये एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें नेक्स्ट चॉइस है आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है वो लिखना मत भूलिएगा, दो दे आर नॉट आस्किंग फॉर इट हियर, बट फिर भी आपने क्वेश्चन हमेशा उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। तो 2 लाइन में फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है वो लिख दीजिए और उसके बाद फिर 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग लिखिए और अपने क्वेश्चन को इस तरह से कंप्लीट करिए। Now our last question of this session says, Kaina, a beauty products e-commerce company, is diversifying into men's grooming. यहाँ पे किस कंपनी की बात हो रही है सबको आइडिया लग गया होगा, स्पेशली गर्ल्स को तो लग ही गया होगा। Now it is also tapping the demand for beauty products in the fashion industry and amid professionals such as makeup artists. As it diversifies its online presence, Kaina is also expanding its physical presence. They have 41 outlets across 18 cities presently and plan to expand to 180 outlets. Each store requires a capital expenditure of 60 to 80 lakh rupees. The company has decided to raise funds by issuing equity shares but not directly to the public, rather by offering them for sale through brokers. Now part 1 says, identify and briefly explain the method of flotation followed by the company. Then second, also name and explain the other methods of flotation that can be used by company for raising funds from the public in the primary market. And this question carries 5 marks. Now Kaina Limited यहाँ पे जिस flotation method की बात कर रहे हैं वो है हमारा offer for sale, where shares and securities are not issued directly to the general public but are offered for sale through intermediaries like issuing houses, brokers, etc. at an agreed price, who in turn resell them to the general public. Okay, and then they are saying that name and explain other methods of flotation that can be used by company for raising funds from the public in primary market. तो प्राइमरी मार्केट के जो अदर मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन हमने पढ़े थे, लाइक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, EIPO, उनमें से कोई भी 3 मेथड्स आपने एक्सप्लेन करके लिखने हैं। सो फर्स्ट आपने ऑफर फॉर सेल एक्सप्लेन करके लिखना है और फिर उसके बाद प्राइमरी मार्केट के जो मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ फंड्स हैं उनमें से कोई भी 3 मेथड्स को एक्सप्लेन करके लिख देना है और आपका ये आंसर भी हो गया कंप्लीट। That's all for today. Thanks for staying in tune and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you and goodbye for now. And don't forget to attend my next session also, because we are going to discuss some more practice questions until your final exams. So keep practicing and all the best.